Now I would like to request Dr. Mudassir Hassan Bhatt, who is not present here, sir. Now I would like to request our worthy Regional Director, Dr. Shahnawaz Ahmed Dar sir, to enlighten us regarding the start of the 2024. Naveed Hamid Saab, so for sparing his valuable time, because he is from the SOCOST K and being a Chief Executive Officer, so he has so much workload, and they had a meeting at 4. So since then, he made it for all of you so that he can share some ideas with you. He can share his experience with all of you. I'm highly thankful to Mr. Samir Ahmed Bhatt Saab, who is the faculty at EDI J&K Entrepreneur Development Institute. And he also requested, came here on our request and shared his insights regarding innovation and entrepreneurship, because when we talk about entrepreneurship in the UT of Jammu and Kashmir, the first institute that comes to our mind is J&K EDI. I would like to congratulate all of you for making it to IGNOU, for joining IGNOU, for joining our family, because all of you, the students who are joining us today, you are our new learners. You have got enrolled for January 2024 session, so I wholeheartedly welcome all of you to IGNOU, for being part of the IGNOU now. In order to set that tune, so that you can find out what IGNOU has come up for you, so we have called you here. We have tried to make you a part of the system that we are running. The IGNOU as a university, what all activities, what all academic activities, academic programs that it is going with. So we have tried to connect you with that. So this is in that direction that we have called you here. You know, IGNOU as a university, you might not be having an idea at this stage that so far as IGNOU as a university in the distance learning is concerned, so how it has came up with so many things which have made it possible for learners not across the India but across the world to achieve what they want in life. Because IGNOU offers you that distance learning. And in distance learning, we know students have their own limitations, students have their own requirements, okay? Students have their own assessment of their self, and accordingly their educational needs, and accordingly they enroll themselves in various programs. So let me not take that part, but IGNOU is having that setup which is basically a kind of a setup which is taking education at the doorsteps of the learners. IGNOU this time has more than 56 regional centers all across India and thousands of learner support centers which are taking education to every nook and corner of the country. Regional Center Srinagar is having its network of near about 45 study centers that is spread all across the state, or across the UT of Jammu and Kashmir and Ladakh. Now, starting these programs, conducting these programs, and making our students part of these programs is something that we are trying to do by conducting these activities, by conducting these programs. Day before yesterday, we conducted National Youth Day. That was in the virtual mode. We again connected with our learners on the National Youth Day through the IGNOU का जो मैकेनिज्म है, एक प्रॉपर मैकेनिज्म है जिसमें हर एक जो कंपोनेंट है आपके प्रोग्राम का, उसका हमने एक कैलेंडर बनाया, एक शेड्यूल बनाया, ठीक है? एक तो उसको आपको फॉलो करना है, सो दैट कोई कंपोनेंट जो है वो ना रहे और आपकी डिग्री या प्रोग्राम कंप्लीट ना हो पाए, तो वो एक कैलेंडर आपको फॉलो करना है, चाहे वो असाइनमेंट सबमिशन का है, चाहे वो एग्जामिनेशन का है, चाहे वो कोई और कंपोनेंट है,
क्योंकि आप लोग सभी नए स्टूडेंट्स हो, तो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो कैलेंडर है, डू फॉलो दैट कैलेंडर, और साथ साथ अगर आप लोगों के पास ब्राइट आइडियाज़ है, डू शेयर विद अस एंड वी विल बी प्रोवाइडिंग विद नेसेसरी सपोर्ट. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. Celebrating National Startup Day 2024. I will take opportunity to like to request Mr. Naveed Hamid, CEO Cost Innovation, Incubation and Entrepreneurship for webinars regarding the innovation in the light of startup. University, and more important, the student innovators. You know, I oftenly call student as innovators because everyone is fulfilled with some good, great ideas. So I welcome you, and this side I am Naveed Bhatt. I'm the Chief Executive Officer of Sucast K Innovation, Incubation and Entrepreneurship Center. It's a center with a brand name of SKIE, S-K-I-I-E. It's an incubation center plus a center that's dedicated to all the young minds and the innovators of our state, our UT. Yesterday I got call from our Loud Regional Director sir कि आपने यहाँ कल आना है. सीधे उन्होंने बोला कि आपने यहाँ कल आना है. So there was no choice for me to say no. जब वहां से हुक्म आए तो फिर आपको उसका जो है आपने एहतराम भी करना है. तो yes, I am here. You know, it will be not the sort of a lecture. And lecture for what? It will be more of a one-to-one interaction where I will try to make you people understand what this incubation, innovation, startup, business, what this is all about. मतलब जो इनका स्टडी मटेरियल होता है, जो यहाँ पे पढ़ने का इंसान को मौका मिलता है, मुझे लगता है मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं है मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी पे डिग्री की है, बट मैं कह रहा हूँ कि जो इग्नो प्रोवाइड करते हैं, जो प्लेटफॉर्म इग्नो हमें देता है, उससे अच्छा प्लेटफॉर्म पूरे इंडिया में कहीं पे नहीं है या किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं है. बिकॉज दिस स्टडी मटेरियल इज सेट बाय टॉप, जितने भी इंडिया के जो लीडिंग होते हैं, इंटरनेशनल जो होते हैं, इंटरनेशनल प्रोफेसर्स, साइंटिस्ट बड़े बड़े होते हैं, तो उन्होंने ये डिजाइन किया होता है. दे हैव दिस कनेक्शंस ऑल ओवर द वर्ल्ड. उनको पूरी दुनिया पे नजर होती है, उनको पूरे कंट्री पे नजर होती है, तभी वो इस चीज को सेट करते हैं. तो आई विल कंक्लूड, आई विल क्लोज दिस. तो बिफोर क्लोज आई विल अगेन my thanks to the IGNO University, to this director Sahab and to whole faculty of IGNO. Thanks for inviting me here. And इंशाल्लाह हो सकता है कि मैं और भी मेरे दिमाग में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे लगता है कि IGNO will definitely help me in future as well. इंशाल्लाह बहुत काम करने की जरूरत है, अभी बहुत काम पड़ा हुआ है हमारे कश्मीर, उस पर काम करने की जरूरत है. मुझे लगता है अगर आप में भी कोई है वॉलंटियर है या कोई भी काम करना चाहता है, प्लीज मेरे साथ आप कांटेक्ट या IGNO से प्लीज, वो खुशकिस्मती होगी मेरे लिए भी, ताकि हम इस अपने यूटी के लिए कुछ कर सके. थैंक्स अ लॉट. मैं नहीं समझता हूँ कि मैंने कुछ बहुत बड़ा अचीव किया है. देयर इज लॉट टू डू, बहुत कुछ करने की जरूरत है. देखिए अभी अगर मैं कहूँगा अभी कितना बड़ा इशू है हमारे JNK में, अभी मैंने इस पे कल आप देख लीजिएगा, चाहे ग्रेटर कश्मीर, राइजिंग कश्मीर, मेरे एक आर्टिकल आ रहा है ड्राइनेस पे, जो क्लाइमेट चेंज हो गया है, इस पे मेरे एक आर्टिकल आ रहा है, आप देख लीजिएगा वो कल. तो क्लाइमेट चेंज हुआ, अभी इतना वेदर में हो गया कि हमारा कश्मीर जैसे अभी मतलब 5 फीट या 2 फीट या 3 फीट एटलीस्ट बर्फ तो होनी चाहिए, बट अभी हमारे पास यहाँ ना तो स्नोफॉल है ना रेनफॉल है. मैं कुछ रिसोर्सेज पे मैं रिसर्च कर रहा था, तो हमारे जितने भी मतलब मेन कुछ जहलीम की लेवल आप देख लीजिए कितनी मतलब डाउन हो गई, या बहुत सारे स्प्रिंग्स है जो फेमस स्प्रिंग्स थे, उनका जो लेवल है वो भी कम हो गया. तो द थिंग इज कि हमें सोचना है कि अगर ये स्प्रिंग्स
किसी चीज में अपनी सोच डालते हो, किसी चीज में अपनी समझ डालते हो, किसी चीज को डिफरेंट तरीके से करते हो, दैट्स नोन एज इनोवेशन। दैट्स नोन एज इनोवेशन। दैट्स व्हाई मैंने पहले अपने स्पीच में बोला, बिफोर स्टार्टिंग माय लेक्चर, मैंने आपको बोला कि यू ऑल आर स्टूडेंट इनोवेटर्स। आप में सोच है ना, जब सोच है तभी तो आपको रास्ता मिला कि इग्नो सेंटर कैसे आना है। जब सोच है तो तभी आप कह सकते हो कि 10 और 10 20 रुपए है। जब सोच है तो तभी आप घर पे जाके खाना पकाते हो, इसमें नमक इतना डालना है, मिर्च इतनी डालनी है, ये मसाला इतना डालना है, तभी शाम को कोई। Assalamu alaikum and warm good afternoon to all of you. I'm Dr. Sameer. I'm working as faculty in Jammu and Kashmir Entrepreneurship Development Institute. You all must be aware of the same. My topic of discussion today primarily will focus on the schemes and the funding opportunities in the UT of J&K. But before dealing that part, I'll be focusing on something more important. That is the purpose of this gathering. You all are here. There must be some purpose behind it. उस purpose को discuss करने से पहले I want to convey that whatever sessions I conduct, there is no one-way communication. I would like to listen more from you, rather speak. That makes the session more enthusiastic, vibrant. So I would like to listen more from you, and then I'll reach the funding opportunities at the जो इंडिया की स्कीम्स है, ठीक है, आमतौर पर मैं आपको बताऊं, जब कभी बैंक से कैपिटल सीड लेने की कोशिश करते हैं, वो वहाँ पे कोलेटरल मांगते हैं, ठीक है। तो मुझे आप बताइए, जितने भी ये सारे स्कीम्स है, उसके अंदर से कोलेटरल वो देना पड़ेगा सिक्योरिटी पर्पस के लिए कुछ? First of all, thank you for इसलिए सवाल आपके ज़हन में आ गया। Seed capital fund scheme used to be the part of the ADA initially. Now it's not. It's with the labor and employment. पहली बात. Second, you don't have to go directly to the bank. You have to go to the labor and employment. वहाँ पे आप जाइए. This seed money is from the government. It's not from the bank, right? So there's nothing like that bank will do create an obstacle in receiving this seed money. No, there's nothing like that. So you need this seed money. That seed money will be provided to you. Yes, bank has issues with the amount they are going to provide, not the money which government is going to provide. So there is no collateral. There is nothing like that. Security की जरूरत है. Who is asking for you? Yes, you can really go to the scheme guidelines. Seed capital fund scheme आप labor and employment की website पे जाइए. You will get the scheme guidelines. वहाँ पे आपको clearly mention होगा कि ऐसा कुछ. If any bank is asking you for that, you can complain to the labor and employment department. They will take actions. सर, एक्चुअल में मैं एक सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मेरा एक अभी प्रोजेक्ट है, वो इसी पर है, एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे डेवलप किया जाए, ठीक है। तो मैंने कई ऐसी You are a learner of IGNOU? I also as a learner of IGNOU for सब कुछ समय पहले, लेकिन You are our alumni. तो आज हमने आपने प्रोग्राम कंप्लीट किया है IGNOU से? हाँ एक प्रोग्राम किया था, किया है? वो BPT का एक अच्छा प्रोग्राम आता था। तो फिर कोविड का आया, तो उस समय पे उसको फिर आगे कंटिन्यू हम नहीं स्टडी कर पाए। तो लेकिन उसके बाद हमने अपना स्टार्टअप किए, बहुत सारे स्टार्टअप्स किए। तो लेकिन कुछ दिक्कत आने के बाद हमने सोचा कि एक सोशल कम्युनिटी के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो हमने जो रिसेंटली मैंने अपने खुद के लिए PMEGP के लिए अप्लाई किया था, तो मेरा एक कॉस्ट था 20 लाख रुपीज़ का। बट अनफॉर्चुनेट बैंक, हर एक बैंक बोलता है कि हम नहीं इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हमें गारंटी चाहिए। तो मैंने उसमें से CGTMSE कवर भी लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेट सारे बैंक बोल रहे हैं कि हम CGTMSE कवर को नहीं लेंगे। Before adopting a particular scheme, better is to go to the guidelines of the scheme. If the scheme guidelines say there is no requirement of guarantee, no bank can ask you for the guarantee. It depends upon the scheme guidelines. If any bank is asking for the guarantee, then you can complete with the respective department and they will take legal action against them. मैं सर इनको ऐलान करना चाहता हूँ। Basically, the schemes which were launched by India, वो any institution, whether India or so there is a major role of the bank, because the financial institution is a bank,
those are providing financial assistance. You are just expediting all the processes. Suppose you are taking the application of the schemes. So as I come to know, so finally it goes to the discretion of the bank whether they provide finance to the person or not, and they are dragging the energy of the people. Bank is not instantly providing that opportunities which are being announced by the government, which are being announced by EDI and other organizations. So the students, today's youth, they have miscommunication. Facilities are there. First of all, you should bring all these things in public domain. And then you should know all the schemes which are sponsored by the government of India. So this day, as I heard all lectures, all expert lectures from your side, so national innovation is one concept, startup is another concept, and your entrepreneurship is another concept. It is a trilateral concept. So startup, national startup is an initiative by the government of India. I would say this is unethical. It's an initiative started by the government of India in order to launch certain schemes to empower the youth, to provide them job opportunities. So it is a concept one thing that in some areas the state economy is controlled by the state, either by UT or individual cannot develop a state, but somehow individual can play a role in the state. As the economist, there should be a classless society. Karl Marx said in Das Kapital and all that. So I would like to say, first of all, this is a very good concept which has been introduced or initiated by Government of India. But under these schemes, the all institutions need to be a good reformation. Because I came to know when Ismail Sir was directed to EDI, I have been there with a case. I debated with them, I put some deliberation there. So ultimately the case went to the bank. Okay. Bank rendered maximum energy. Right. So this is, if the guys are agreeing with me or not, no doubt schemes are better, schemes are beneficial. EDI, every institution is on tools to work and to provide support and enhancement of the productivity and job employment of the students. Share some experience here. Sir ने अभी बताया कि just do it. So exactly, and I think it's more natural जब आप prepare नहीं होते हैं. Whatever comes, it comes from your heart only. So मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि I'm just one among you, a student of IGNOU. बट एक आइडिया, जैसे नवीद सर ने कहा था कि एक आइडिया होता है वो आपको यहाँ से यहाँ पहुँचा देता है. सिमिलरली फ्यू मंथ्स बिफोर आई हैड एन आइडिया, आई शेयर्ड विद सर. तो सर ने हेल्प करा, उसके बाद आई अप्लाइड समवेयर, तो आई गॉट थ्रू इट. सो दैट आइडिया ब्रॉट मी वहाँ से यहाँ तक. सो दैट्स इट. आई थिंक आप किसी भी जगह पे जाए, आप किसी भी करियर में हो, आप कहीं भी जाए, वेदर you want to become a doctor, you want to become an engineer, an entrepreneur, anything in your life, I think give your best. जैसे मैं अपनी बात करूँगी, I am masters in biotechnology, I am a gold medalist in the field, but at the same time I was not interested in continuing PhD, although I had 2 JRFs in my hand. So I shifted my career from biotech to social work. So currently I'm doing masters in social work from IGNOU. And since मेरा एक plan है to open my NGO, I love to do social work. Besides that, I love fashion designing, तो मैं वो भी करती हूँ. I'm an entrepreneur. I have my page on Instagram also. I sell clothes there. That's all. Do whatever you want to. Just best of luck to everyone. And thanks. Thank you, sir. Thank you for your support. Thank you. So entrepreneurship का concept है. It has deep roots in Islam as well. So I'd like to give you a वाक़या. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam के पास, एक सहाबी आए and he was like, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I do not have any means of livelihood, okay? So please give me something and I'll return it to you after some time. Like udar. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ने कहा, it is better for me to give you an idea जिससे आप क्या कर सको, अपना livelihood कमा सको. तो what he did is, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आपके घर पे कुछ ऐसा है जो आप बेच सकते हो मार्केट में, and he said कि मेरे प्यारे ने भी, मेरे पास तो एक प्लेट है बस और मेरे पास उसके अलावा कुछ नहीं है. सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप उसको लेके आइए एंड हम उसको बेचते हैं. एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोल्ड इट इन द मार्केट फॉर 2 dinars. ओके, तो फिर वो उस साहिल को दिए एंड उस साहिल को बोला कि एक कुल्हाड़ी का सर लेके आओ और एक लकड़ी का टुकड़ा विच विल एक्ट एज एन हैंडल टू द एक्स. एंड फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दस्ते मुबारक से वो जो एक्स का हेड है उस वुड पीस में लगाया एंड उसको कहा जंगल जाओ
वहाँ से लकड़ी काटो और वो आके मार्केट में भेजो। एंड उनकी बरकत से इस वक्त जब वो साहिल था, ही वॉज अ बेगर, एंड 1 साल के बाद जब उसने ही वर्क विद डिटर्मिनेशन, 1 साल बाद वो साहिब ज़कात हो गया था। व्हाट डू यू मीन बाय साहिब ज़कात? मीन्स यू आर अ रियली रिच पर्सन हु हैज टू गिव समथिंग आउट ऑफ हिज मनी इन द वे ऑफ अल्लाह। ठीक है। And one more thing we have to see that Allah Ta'ala says in Quran, Surah number 6, verse number 164. I will read out it to you. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمْ خَيْرًا مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Which means Allah has bestowed upon us Islam as the final religion. Okay, and He says in this ayah that हमने और हमारे रसूल ने आपके लिए मुकर्रर किया, इट इज नॉट बिफिटिंग फॉर अ मुस्लिम टू गो आउट ऑफ दोज बाउंड्रीज। तो जो इस्लामिक बाउंड्रीज है, नो देम एंड रीड अबाउट देम एज वेल। आपको हर चीज का सोल्यूशन जो है वो इस्लाम से मिलेगा, बिकॉज अल्लाह ताला सेज, जब हज्जतुल विदा का मौका था, द लास्ट वर्सेस व्हिच वर रिवील्ड ऑन प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, टुडे वी हैव कंप्लीटेड एंड परफेक्टेड योर दीन। So if we find the roots of everything, be it entrepreneurship, जो कि मैंने आपको अभी एक वाक़या बताया, and आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दुनिया का पूरा वेल्थ है, 90% of it comes out of business, so which is entrepreneurship once again. And हदीस कुदसी भी है, अल्लाह ताला ने फरमाया अगर जन्नत में किसी को तिजारत करने की इजाजत हो तो या तो he can sell perfumes or he can sell clothes. So Islam appreciates what? Entrepreneurism. Okay. So we as Muslims, हमारी असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर ये मिस्टर बामर सिंह जी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार from Incubation Center, Kashmir University and Department of Jal Shakti. I would like to extend my gratitude to attend this program and for sharing your precious knowledge and make this program successful. I would also thank to IGNOU team and our learner to attend this program. Thank you. सर आपका खैर मतलब हमारे YouTube चैनल द क्वेश्चन ऑन इंडिया में सर, द सेक्रीफाइस में सर, जो आप यहाँ पर आ जाए, जो इग्नू की वसालत से प्रोग्राम हुआ था, इसके हवाले से हमें बताइए। जी शुक्रिया। पहले तो मैं अपना नाम बताऊं जी, मेरा नाम रोहिल मकबूल शेख है और मैं एज ए वाटर क्वालिटी एनालिस्ट यहाँ पे काम करता हूँ जम्मू कश्मीर में। तो चूँकि ये स्टार्टअप प्रोग्राम था तो इग्नू ने मुझे इनविटेशन दिया था, तो आई एम हाईली थैंकफुल टू द डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर इग्नू एंड ऑल द फैकल्टी मेंबर जिन्होंने मुझे टाइम टू टाइम हेल्प किया। तो मैं इग्नू से मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमास या डिग्रीज़ मैंने की है, क्योंकि मैं एज ए प्रोफेशनल हूँ, मैं डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ जितनी भी चाहे मेरी पब्लिकेशंस हो या और भी रिसर्च वगैरह जितने भी होते हैं, उसमें इग्नू का बहुत बड़ा हाथ है और इग्नू ने मुझे टाइम टू टाइम हेल्प किया है। एंड मुझे लगता है कि ये मेरे लिए खुशकिस्मती है कि यहाँ से इन्होंने मुझे एक तो हेल्प की और मुझे मौका मिला कुछ करने का। तो ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं, मुझे लगता है कि ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए, क्योंकि इससे जो हमारा यूथ है, एजुकेटेड यूथ है, उनको भी इनसे इंस्पायरेशन मिलती है और उनको भी ये मौका मिलता है कि हमें इन फ्यूचर करना क्या है। तो मुझे लगता है कश्मीर में जो है, कश्मीर में बहुत टैलेंट है, बहुत सारे ऐसे भी हैं मतलब स्टूडेंट्स हैं जिनमें बहुत टैलेंट तो है लेकिन वो आगे नहीं आते हैं। मुझे लगता है कि अगर ये स्टूडेंट्स वगैरह आगे आएंगे और अपना जो जितना भी उनके पास टैलेंट है या जो भी वो काम करना चाहते हैं, ऐसे जो स्टार्टअप प्रोग्राम्स हैं, देखिए ये जो स्टार्टअप प्रोग्राम्स हैं, मुझे लगता है इनसे बहुत बूस्ट मिलेगा। जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या यंग जनरेशन्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा ये तो एक तो मोटिवेशन है मिलेगा इनको, और दूसरा इनको एक एनकरेजमेंट भी मिलेगा कि कैसे करना है, कैसे अपना ये जो अपने आइडियाज़ हैं वो आगे लाने हैं। इग्नू की तरफ से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने जिनने ये इनिशिएटिव उठाया है। और उसके बाद जो मतलब हमारे इश्तियाक साहब है यहाँ पे, जो स्टूडेंट्स की बहुत हेल्प करते हैं, या शौकत साहब हैं, या बहुत सारे जो फैकल्टी जो मेंबर्स हैं यहाँ पे टाइम टू टाइम इग्नू मतलब मैं जो जितनी भी फैकल्टी है उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि वो स्टूडेंट्स को बहुत मतलब गाइड करते हैं और उनको एक सही डायरेक्शन भी दिखाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं कहना चाहूँगा कि जो इग्नू का स्टडी मटीरियल है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड है इनका, ये
बहुत अच्छा है। मैंने पढ़ा है इग्नू की जो बुक्स है वगैरह, जो इनका स्टडी मटेरियल होता है, मैंने उस पर रिसर्च भी किया है, देखा भी है। तो इट हैज़ बीन ये जो बनाते हैं, जो बनाने वाले होते हैं इसका जो कोर्स, ये बहुत हाईली प्रोफेशनल होते हैं और इनकी नज़र जो है बड़े बड़े IITs पे होती हैं, बड़े बड़े जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो उनसे कंपेयर करते हैं इस जो हमारा यहाँ पे जो सिलेबस होता है। तो एज अ स्टूडेंट, एज इग्नो स्टूडेंट, आपकी आखिर में मैसेज क्या रहेगी सर? देखिए, मेरा ये मानना है कि इंसान में अगर कुछ करने की चाहत हो, कहीं पे भी घर बैठे भी इसको हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लेकिन इंसान में एक चीज़ होना चाहिए, इंसान में कुछ करने की चाहत होनी चाहिए। जब इंसान को ये चीज़ मतलब कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, कहीं बढ़ना है, आगे बढ़ना है, देन डेफिनेटली ही विल अचीव द गोल। जी, थैंक यू। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम हफ्सा नज़ीर है। मैं इग्नू की स्टूडेंट हूँ। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ मास्टर्स इन सोशल वर्क। जी जी, आपने मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क चूज़ क्यों किया? जी बिल्कुल। मेरा सपना है कि मैं एक NGO खोलना चाहती हूँ। इसी वजह से आई टुक एन एडमिशन इन इग्नू फॉर मास्टर्स इन सोशल वर्क, क्योंकि करंटली कश्मीर में अपार्ट फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी इग्नू ही है जहाँ पे आप सोशल वर्क में मास्टर्स कर सकते हैं। एंड आई थिंक दे हैव अ ब्रॉडर प्लेटफॉर्म बिकॉज नेशनल यूनिवर्सिटी है, सो आई ऑप्टेड फॉर इट। एंड बिसाइड्स इट आप अपना बाकी जो आपका काम है वो भी रेगुलर कोर्स पे कंटिन्यू कर सकते हैं। मैडम, आज प्रोग्राम यहाँ पर स्टार्टअप, जी तो उसके हवाले से हमें बताइए, आपने क्या सीखा? तो जी, आज का जो प्रोग्राम था यहाँ पे दैट वाज अबाउट नेशनल स्टार्टअप डे। तो सर ने सभी एंटरप्रेन्योर स्टूडेंट जो इनको इनवाइट करा था। आई एम ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर स्टूडेंट। तो हम बहुत सारे एक्सपर्ट्स और बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आए थे यहाँ पे, जैसे DIG से आए थे, जल शक्ति डिपार्टमेंट वगैरह से, स्कॉस्ट के इंक्यूबेशन सेंटर से आए थे, जिन्होंने स्टूडेंट्स को इंगेज करा इन एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट्स और ये समझाया कि आप कैसे गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ उठा सकते हैं। एंड या तो आप इग्नू में पढ़ती हो, तो आपको कैसा लगता है यहाँ का मटेरियल? आपको हटके लगता है? डेफिनेटली इग्नू का जो मटेरियल है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। आप देखिए, क्योंकि जो भी बनाते एक्सपर्ट्स हैं दे आर बेस्ट इन द कंट्री। आप कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जाइए, IITs इवन जाइए, जो इग्नू का मटेरियल है इट्स कंपेरेबल टू दोज यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो। जी, आखिर में आपकी मैसेज क्या रहेगी? मेरा मैसेज यही रहेगा कि आप इग्नू अगर आप चाहते हैं कि आप बिसाइड्स अपना दूसरा काम भी कर सकते हैं, बिकॉज आज वो ज़माना नहीं है कि यू कैन स्टे इन वन कोर्स फॉर लाइक 2-3 years, उसके बाद आप रेगुलरली अटेंड करें वो क्लासेस, बिकॉज वर्ल्ड इज़ बियॉन्ड दीज थिंग्स नाउ। अभी देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ पहुँच चुका है। तो करंटली आप इग्नू से अगर आपको कोई ड्रीम है, कोई पैशन है, आप वो कोर्सेज भी कर सकते हैं। बिसाइड्स दैट आपको हर एक प्लेटफॉर्म में यहाँ के जो रीजनल डायरेक्टर सर है शहनवाज सर, वो आपको बहुत ही हेल्पफुल है, आपको बहुत हेल्प करते हैं। जैसे कि मुझे कि एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट था, सो ही हेल्प मी इन वर्डिंग द कॉन्सेप्ट टू अ ड्रीम। अच्छा, जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ है या आपके टीचर हजरात, जी, आप कैसे उनको वोट ऑफ थैंक्स देना चाहती हो? दे आर ऑल वेरी हेल्पफुल। जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, राइट फ्रॉम रेगुलर अपडेट्स, क्योंकि इग्नू यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, इतना ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे कवर करता है, उसके बाद इतने कम एम्प्लॉयज़ होके वो सारा मेंटेन करना ऑन अ रेगुलर लेवल, आई थिंक दैट वर्क इज़ कंडेमेबल इन इटसेल्फ। सो या, वंडरफुल जॉब। जो आपकी क्वेरी है उसका जवाब आपको मिलता है? डेफिनेटली विद इन डेज, लाइक अ डे। अगर आप खुद से आ जाएंगे तो एक दिन में तो हो ही जाता है, अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो विद इन 2-3 दिन तो हो ही जाता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच।